हेलो स्टूडेंट्स सो आज आम आ गए नुआ टॉपिक पढ़मा क्लास 12th रो फंक्शन रो हमें प्रीवियसली भी कितने टॉपिक हमें कंप्लीट कर सारला दैट इज वन फंक्शन दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन ऑन टू फंक्शन दैट इज सर्जेक्टिव फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन इनटू फंक्शन ई बाबत रे हमें आगरो कंप्लीटली कर सारिछु इतर बाबत हमें प्रॉब्लम भी देखि सारिछु तार परे क्लास 12 रे हमर पाखे आउ गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक अछि फंक्शन रा इट इज अवर कंपोजिट फंक्शन ओके ए जिनिसटा हमको बुझवार लगी कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन मींस कंपोजिट फंक्शन बुझवार लगी हमको बहुत से देखवार लगी पड़वा एटा के बेस करी के हमको एग्जांपल भी बहुत करवार लगी पड़वा सो एटा गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक है सो देखना काना होची के तो दिस कंपोजिट फंक्शन कंपोजिट फंक्शन जितेला मैं कहूँ आमे बुझी पारमा जे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन और टू और मोर फंक्शन जितेला हमें दुईटा किंबा दुईटा रो अधिका फंक्शन के आमे जदी मिक्स करबा जदी कंपोज करबा तो इट इज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन जेंता कि हमें म्यूजिक के कंपोज करू दुईटा सॉन्ग के जितेला हमें मिसोचू मिक्स करू जेता कि हमें कंपोजिशन कहू ठीक सिमिलरली जितेला हमें दुईटा फंक्शन के कंपोज करमा सेताला काना काना आसबा पॉसिबिलिटी काना আছে केते बेले दुटा फंक्शन के हमें कंपोज करि पारमा सही सब जिनिस बाबत हमें एबे देखबा सो व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन दैट इज composition of two or more ई फंक्शन के जितला हम देखु छु कंपोजिशन फंक्शन के कंपोजिट फंक्शन के आपको भल से बुझवार लगी पड़बा जिनिसटा काना जे तो लेट्स स्टार्ट लेट जेतरा हम कहू छु गोटे फंक्शन के আছে f let this f is mapping from a to b let we have a function f from set a let this one set a to set b let we have set b so let this is the function f from set A to set B. So there's another function G, it is from set B to C. Let we have another function G, which is mapping from set B to set C. Let this function is G. Okay, ये function का मैं define करना, कितना ये define हो जाता है मतलब set A रे अच्छी हमारे पास A, B, C, D. लेट हमर पाके चारटा एलिमेंट আছে सेट ए रे सेट बी रो एलिमेंट माने लेट हेले हमर पाके 1 2 3 4 एंड 5 लेट सेट सी रो एलिमेंट माने हेले हमर पाके लेट अल्फा बीटा गामा थीटा एंड 5 okay let we have elements like this where एबे फंक्शन f का काड़ा काड़ा होचे लेट a का 1 के मैप करूचे a is mapping to 1 let b is mapping to 2 c is also mapping to 2 and d is mapping to 3 let function f का is have defined here ready a is mapping to 1 b is mapping to 2 c is mapping to 2 and d is mapping to 3 नेक्स्ट जे फंक्शन टा केना मैपिंग है इट गोटे फंक्शन होई परबा केतले कि एवरी एलिमेंट ऑफ a has an element in b and no one element has two or more elements कोन से गुटे एलिमेंट दुईटा की मैप नहीं करे हां दुई जण गुटे की मैप करि परछन किंतु कोन से गुटे एलिमेंट दुई जण के मैप नहीं करे सो दिस इज आवर फंक्शन f नाउ लेट g हम g के भी डिफाइन करबा let g टा केना डिफाइन होची 1 is mapping to let beta 2 is mapping to gamma 3 is mapping to also let 3 is mapping to theta 4 is mapping to gamma and 5 is mapping to theta okay the function is like this okay हम ऐसा भी कर देता हूं अलग-अलग कर देता हूं okay you can like this you can define like this also 4 is mapping to 5 so we have the function f and g is like this
Okay, when f function টা কানা হচ্ছে a is mapping to 1, b is mapping to 2, c is also mapping to 2 and d is mapping to 3. On function g function যেটা হচ্ছে 1 is mapping to beta, 2 is mapping to gamma, 3 is mapping to theta, 5 is also mapping to theta and 4 is mapping to phi. Function is defined like this. So अभी जो क्या मैं देखना जदि मुझे एबे गोटे फंक्शन रे डिफाइन करी परमा कैन वी डिफाइन a function from a to c? Can we define a function from a to c such that a is mapping to beta? A is like we have defined a function from set a to c. From let this function be like this. किसी भी पर लाइक सही फंक्शन का which is mapping from a to c where a is mapping to beta, b is mapping to gamma and c is also mapping to gamma and d is mapping to theta. Means that say function का है h let define कुछ h बोली let this function be h such that it is mapping from a to c where h of the function of a यदि हमें a की इनपुट करवा हमर आउटपुट टा है बीटा हमर आउटपुट टा c रे आसो ठीक है b यदि इनपुट करवा h of b is equal to h of b का 2 के गला 2 का गामा के आसो and h of c सीधा केन के आसो c to gamma output है on the c input दो छुआ का a रे input is from set a output is from set c. Similarly h of b is equal to theta 3 की जगह theta theta की जगह. So can we define a function like this h which is from a to c such that h of a becomes beta, h of b becomes gamma, h of c becomes gamma, h of d becomes theta. That function is called, this function h is called Gauss function. This function h is called Gauss function. It is G composition f. We can define this as G composition f. Okay, first this function is defined from f from set a to b के जीवा b रू फिर से function का c के जीवा. Okay, like that. The function बहुत आउटर बोल सकते. That is G composition f. Okay, मुझे भी ये point के नहीं. Let us take point E. Okay, what is f of E? F of A equal to 1. F of A equal to 1. And what is G of 1? G of 1 यदि हमें put करवा our output is beta. So G of 1 is equal to beta. So एबे ये 1 क्या कर रही है जितने 1 का लिखी जो can we replace this one in terms of f of a? Can we replace 1 as f of a? Just like g of 1 जगह हमें f of a लिखी पड़ना about h f of a equal to 1. So g of f of a is equal to g of 1 which is equal to beta. এটা তো আমরা বুঝো a is mapping to beta. A is mapping to beta. This function is called G composition of x or of A is equal to beta. Every time we get a function, say composition function defined करनी है, it is G composition of x is equal to G composition f of x is equal to G of f of x. Means G function भितरे f of x का अच्छी. कितने बेले ही परवा जल्दी कितने बेले possible ही परवा if
F range टा F range is subset of domain of G. Possibility केतला possible ही परबा the composition G composition F is defined if the range of F is subset of domain of G. F range टा G रो domain संगे समान हेतिबा जदि हला then this composition function is defined जदि नहीं हला जदि F टा कोनसी गुलो बाहरिया एलिमेंट की वेट करिछि तो जीरो डोमेन में नहीं ना that this is 6 तो जीरो डोमेन में नहीं ना तो this is यार की वेट करे नहीं करे so possibility is केते लोग हमर composition टा डिफाइन नहीं परबा if जदि range of F means A or F रा range जीरो डोमेन संगे समान हेतिबा किंबा सबसेट this is the possibility for G composition F to be defined. Okay, एबे इदा के हमें देखमा clear okay इदा के हम बोलते possibility है obviously हबा कैसे लगी हबा H F रा कोडोमेन और G रा डोमेन समान F रा कोडोमेन और G रा डोमेन जेतु समान है F रा range और G रा डोमेन obviously it equal to subset of okay obviously range of F is subset of domain of G. Okay इदा के हमें देखमा F रा image A रा image जहा बीटा रा pre image F रा A रा image 1 and beta रा pre image टा 1 which is from set B. So first one on the G composition F G composition F लिखना होचे that is G of F of A G of F of A means हमर पहला फंक्शन टा केने डिफाइन होचे पहला फंक्शन टा हला F तार परे फंक्शन क्रिएट होचे तार परे फंक्शन एप्लीकेबल होचे G first from A to B then from A to C so G composition is from set A to C G composition is from set A to C एबे जदि हम सब के डिफाइन करबा A B C D के जदि डिफाइन करबा काला आसबा दैट इज हम सेटा पहला रो डिफाइन करि सारिछु ओके दैट इज G composition F is mapping from A to C for this function from A to C such that G composition F of A G composition F of A हम पहला में बाहर से लिखते हैं now G composition F of B G composition F of B means B टा 2 के गला बीच from A to B के गला 2 के जाउचे from function F and फिर G रे से जाउचे काम यहाँ लखबा फिर G of F of B दबे लखी परमा the function is defined like this G composition F of X is equal to G of F of X. So G composition F of B is equal to G of F of B and F of B is equal to 2. So it is equal to G of 2 and G of 2 is going to be tau. Hence the output is gamma. Now G composition F of C C to 2 C to 2 the function C travel from this point to 2 and from 2 to gamma. Okay, C to 2 के जगह 2 to gamma now G composition F of D G composition F of D D to 3 3 to G composition F of T is equal to so this is about composition function that is G composition F. Similarly F composition G बाहर करी परमा F composition G that is from this to this okay F composition G is from this to this
C टू फास्ट जदी हम फंक्शन टा एटा हेतिबो ओके एफ कंपोजिशन G बाहर करवा ले काना करवा ले पड़वा फर्स्ट ई जिनिसटा समान हेतिबा ले पड़वा लेट वी हैव ए फंक्शन G from C to function G from C to B and F from B to A ओके हमर पास फंक्शन टे जे C2 सॉरी टाइप रो हे नै पारे so for that we have let's take another function that is F composition G लागे अब काना दरकार F composition 0 लागे काना दरकार first G is a mapping from some set like C to B and F is a function from B to A हेतिबार कथा yes G रो को डोमेन और F रो डोमेन समान हेतिबार यदि समान होला त G रो रेंज टा F रो डोमेन साथे समान होला किंबा सबसेट होला G रो को डोमेन टा F रो डोमेन साथे यदि समान होला तो हम कहि परबा जे हमर पॉसिबिलिटी अछि G रो रेंज जगर जे रेंज टा आसमा G रो इट इज सबसेट ऑफ F रो डोमेन the range of G is subset of domain of F then the possibility then se jagare possible hei parba jodi ni hela hei okay that is ame jodi define karba like this is our set E this is our set B and that this is our set C okay let we have function from C to B and we have function from B to B that is let F हम दुईटा डिफाइन करबा G कंपोजिशन F एंड F कंपोजिशन G काना ही तो सेदिन लागि किछटा पॉसिबिलिटी अछि किछटा हमको देखवार लागि पड़वा लागि दिस वन इज 1 2 3 4 like this is A B C D and let this one is C is equal to alpha beta gamma and theta okay now let define a function from C to A to define a function from C to A, theta also alpha is mapping to B, beta is mapping to A, gamma is mapping to C, and theta is mapping to D. Similarly, C is mapping to 4, D is mapping to 3, B is mapping to 1, A is mapping to 2. So the function is like this. Okay? Jodi anta asla, we can define a function from C to A. C to A. Let's call this as F composition G. F composition G fork. Okay. Such that zero domain. Our function like this. C to B, and F is defined from B to A. Okay, so F is defined from B to A. Then we have F composition G is like this, such that F composition G of alpha, first alpha mapping to beta, alpha mapping to B, and B is mapping to 1. Alpha ru B ke asla, B ru 1 ke asla. So it is 1. F composition G of beta. F composition G of beta. Beta ru A ke asla, A ru B ke asla. So it is 2. So now F composition G of gamma. F composition G of gamma, which is SMH it is F composition G of gamma, which is gamma to C and C to 4. Similarly, F composition G of theta, which is equal to theta to D and D to B. So this is our function F composition G, which is mapping from C to A, C to E. So सब बेले F composition G एबे जदि मैं डिफाइन एटा तो अंता है कि अगर हम G composition आपका बाहर करने पर अगर हम G composition F बाहर करते हैं what is the G composition F is from A F रो डोमेन टा है F रो डोमेन टा है सेटा B
So F composition G of A जब मैं बाहर करनी A कैसा करा 2 रे A is coming to 2. It is G of F of A. That is G of 2. But zero domain रे 2 नहीं. Zero domain रे तो alpha beta gamma theta है. Zero domain रे क्या है alpha beta gamma theta. G of 2 रो किसी तो value ही नहीं. तो इस जगह रे G composition F का define ही नहीं. Okay, so G composition है इतना सारा हमारा composite function इतना बाबू हमें आउट के elaborately देखना आओ किसी example भी देखना ऐसा कि बेस करिए so G composition F in general G composition F is not equal to F composition. सब बेले G composition F का not equal to F composition. जी कितना केस रे ही पारी. कितना केस रे possible होती है G composition F का F composition जी संगे समान है but not in all the case. कितना केस रे समान नहीं करवा. तार भी कुछ example देखना और कैन केस रे समान नहीं हुई. तार भी हमें example देखना. So this is the property of composite function. Next हमें तभी भावी करना जी यदि हमारे पास डेटा फंक्शन अच्छे from A B C किसी पॉइंट नहीं दबा let this one is from A B C डायग्राम और F डायग्राम और G तो हमें कहीं पर ना from A to C this is our G composition है first F then G यदि हमें C to A को लिखूं the function is like this then it is G so F composition means first the function is G first G function का होके तापर F function का होके it is from C to A और first यदि हमें define करना this is from A to C first F define होके तापर G का define होके okay so now the next one some examples of composition function okay let कितने बेले possible नहीं पारा let G composition after F composition G से कितने बेले possible नहीं पारा हमको तो definition बोलते देखवा ले पड़ा जे it is like F is a mapping from A to B and G is a mapping from B to C so we have G composition F of X और G composition F कितने बेले define नहीं पारा जल्दी F रो range subset of domain of G. Okay. तो either हमें अंतर भी कोई पर F का कोडोमेन और जीरो डोमेन समान होता है. Okay. which is S same as which is okay हमें ऐसा कोई पर ना जीरो समान है. तो इधर हमें F composition G define करवा ले जी माँ. तो G composition अभी लगी क्या possibility ना हमें लग रहा हो F composition G लगी काना आवाज बता zero domain first arrow range that is range of G is subset of domain of F एक बार बता then F composition G is possible then F composition G is possible तो काना हमारे बता ई कोडोमेन का और एटा समान होगा तो फर्स्ट सी और एटा समान होगा देन किसी पॉसिबिलिटी अछि जब तीनटा समान हो गेले तो सेटा के बेस करके हमें करना let we have a function f mapping from real number to real number mapping from real number to real number such that f of x is equal to x square such that f of x is equal to x square okay now let G is a mapping from real number to real number such that G of x is equal to x cube G
g of x is equal to x cube. Okay, so f composition g टा काना आसो, oh sorry, first g composition f is a mapping from R to R. G composition f is a mapping from this R to this R such that g of f of x काना आसो g of f of x define करी पड़ता कैसे कि f रो कोडोमेन और g रो डोमेन समान है, then we can define g composition. So this is equal to g composition f of x is equal to g of f of x. So the s same it. What is f of x? F of x is x square. We can put f of x. We can put x square in place of f of x. So this is our f of x. Okay. Now what is g of x square? G of x is equal to x cube. What is g of x? What is g of x square? So we can write that x square का whole cube. Just x जगह रे x square के हम replace कर देना. Which is s same as x to the power 6. Which is s same as x to the power 6. Okay. Now what is f composition g? From यही पर बात इधर कोडोमेन और इधर डोमेन समान है. g रो कोडोमेन और इधर डोमेन समान है. So obviously range of g का domain of f रो समान है. कीमत सबसे अधिक. So f composition g is from R to R defined by f composition g of x is equal to f of g of x. Okay. G of x टा g of x टा x cube. So f of x cube. What is x cube? F of x cube टा कितना होगा? F of x is equal to x square. So f of x cube is equal to x cube रो whole square, which is also x to the power 6. So in this case, you can define it g composition f is equal to f composition g. इधर समान है. किंतु टिक्के जब हम चेंज कर देंगे, just a little टिक्के जब चेंज कर देंगे, then this is f of x square और x cube plus 1. यदि जाकर हम g of x के x cube plus 1 कर देंगे, then खाना हवा, then इतने से खाना चेंज. इधर समान असला की हम सही निश्चित है. Okay. इस अगर का उससे जितने x square और x cube अच्छे, इस अगर g composition f वाला x to the power 6 and f composition g का भी है ना x to the power 6. Okay. But in this case, what is our g composition f and f composition? So g composition f of x is equal to there is g of f of x. G of f of x, which is equal to f of x like f of x is x square. F of x is our x square. So g of x square. If we gonna करना x जगह रे x square के replace करना. So just that is x square रो whole cube plus 1. X square रो whole cube plus 1, which is s same as x to the power 6 plus 1. What is our f composition g? F composition g of x is equal to f of g of x. Now what is g of x? G of x is x cube plus 1. So g of x अगर हमें replace करना x cube plus 1, which is equal to f of x cube plus 1. Okay. Now what is f of x cube plus 1? F of x तो है क्या x square. F of x square plus 1 टा क्या x cube plus 1 टा x cube plus 1 रो whole square. What is this? This is our x cube whole square, x to the power 6 plus 2x cube plus 1. Okay, x to the power 6 plus 2x cube plus 1. ये तो इधर समान में. That you can say that g composition f is not equal to f composition g. So we can say that just देखो इक्के जगह हमें change कर देना है g of x और f of x भी change कर देना चाहिए. कौन सी गुट्टे जगह रे टिके change कर देना है? सेटा असली होचे हमार g composition f is not equal to f composition g. So in generally this is not possible or these two are not equal. केतेडा केस रे just in some particular case
they are same, but not in all case they are same. Okay, I would रखना let problem कड़ा so let we define f is a mapping from R to R such that f of x is equal to let x square plus 1. Okay, f of x is equal to x square plus 1. Now let okay of x plus 1 just x plus 1 देते हैं आपको visual लगी देगा and g is a function from 0 to infinity to r 0 to infinity to r. Let g of function are defined g of x is equal to root over of x. G of x is root over of x. So everything we have to find out g composition f of x. Okay. Define he परवा के जगह में देखिए define करवा ले जामा we have f from range of x is subset of domain of g होतुवा कथा इना हो जगे नहीं होगा this is not ई केस रे नहीं आसवा not applicable कैसे लगे range रो f रो range is r range of f is r but domain of g रो domain टा केते 0 to infinity 0 to infinity. So we can say that g composition f of x is not applicable or हमें define नहीं करी पारो क्या के लगे define नहीं करी पारो define कले problem टा खाना आसवा इस जगह रे मुझे दे g composition f of x टा define करी देली then problem टा खाना आसवा हमें चलना problem टा इधर आसवा g composition f of x is g of f of x g of f of x. What is g of f of x? F of x is x plus 1. It is g of x plus 1. What is x plus 1? G of x plus 1? It is root of x plus 1. So f is an extra actually. Extra can was extra is r was. That g composition f is mapping from r to r to r. Okay, तो एवं जैसे भी R में कौन सी उठे एलिमेंट है लेकिन let G composition है of -2 G composition f of -2 and also this is same as G of f of -2 but f of -2 define है this is G of f of -2 लगे थे f of -2 का सूत्र -2 plus 1 ठीक है -2 plus 1 is equal to -1. This is g of -1. And what is g of -1? G of -1 is equal to root over -1 plus 1 so it is 0. Define होउची किंतु एतला ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ f of -2 plus 1 -1 sorry it is singular g of -1 डाला root over -1 sorry so g of -1 is equal to root over -1 but this cannot be defined on the real number can like 0 domain रे -1 नहीं that's why this cannot be possible so सेथिल लागि ई जिनिसटा ई कंडीशन टा हेबाटा जरूरी सेथिल लागि हमें g composition एटा डिफाइन करी नाही पा किंतु f composition g डिफाइन करी पानो here in this case g composition f is not defined but f composition g of x देखो this is इधर o g रो o डोमेन और f रो डोमेन का समान इधर किसी प्रॉब्लम नहीं
क्या कर लगी? So this is f composition g of x is equal to f of g of x. What is g of x? G of x is root x. So what is f of root x? SMH root x plus 1. x लगा रही हमें root x पुट कर देते. Okay. So ଏବେ ଏ ଜାଗାରେ କାଇଁ ଥିଲା କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେ ଡୋମେନଟା ଅଛି is from g to এটা আসলে আমার 0 to infinity এটা হলো আমার r এটা भी হলো আমার r এটা হলো আমার फंक्शन है. So যেতলা আমরা ডিফাইন করবা যে x জায়গায় যে ইনপুট করবা that is from 0 to infinity g ର ଡୋମେନ ରେ ଯେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ପୁଟ୍ କରବା root x ରେ so ଏ ଜାଗାରେ डिफाइन करबा. That's why here G composition F is defined, but F composition G is not. Sorry, G composition F is not defined, but F composition G is defined. Okay? आओ किछटा एग्जांपल देखो. जेंटा कि हमें डेरिवेटिव पढ़ला वाला इतला में चेन रूल हमें नसो से जगह हमें प्रीलिमिनरी डिफाइन in chain rule टा जेंटा আছে that is all about composition function different function composite entry तो सही जगह हमें डिफाइन करवा तो composite entry रखवा that is like f of x एबे में आओ r2 और इतना 9 आवर काना हो जे देखो हमें f of x g of x बेटा फंक्शन नॉर्मल that f of x is equal to x square and g of x is equal to sin x both are from r2 or r2. Okay, here you can see that f is mapping from R to R and G is also mapping from R to R. So in the both the case, F composition G be possible as G composition F be possible. So what is G composition F of X? Just G composition अभी हमें डिग्री चेंज करते रहिए किसी का एग्जांपल देखो G composition F of X. And here F composition G of x. Okay, what is G composition F of x? So this is our G of F of x, and this is our F of G of x. Okay, now F of x is equal to x square. So this is our G of x square. What is G of x square? G of x square is sin x है ना. G of x square क्या करते हैं हम sin of x जगह रे x square रिप्लेस हो x square. ठीक है जी. एबे f composition की करना है इसको f composition की f of what is g of x is equal to sin x. एबे you know जहां उससे तार स्क्वायर है you know x जगह रे हम जहां पुट करबा 1 पुट करले 1 2 पुट करले 4 जहां पुट करले तार स्क्वायर एबे हम पुट करू जो sin x तो काना आसबा sin x रो होल स्क्वायर. So this is our sin x रो होल स्क्वायर which you can write this as sin square x. So these two are both are not equal. It is a sin x square and it is sin square x. तो यदि हमें डिफाइन करवा G composition f of 2 and f composition G of 2. So this one is sine of 2 square. It is sine 4. But here in this case it is sine 2 of 1 square. Sine 2 of 2 square. So both are different. अब भी हमें किसी का फंक्शन रखना बेटा अलग अलग किसी रखना. Let we have some other function like let f of x is equal to some e to the power x and g of x is equal to cos x. Okay, now what is g composition है? That is g of f of x. F of x अगर हमें लिख दी फॉर्म e to the power x. This is g of e to the power x. Okay. Now what is f composition g? That is our f of cos x.
ओके सो एबे कण हम g of e to the power x जगह रे e to the power x लिखा it is our cos e to the power x it is our cos e to the power x but here it is cos of sorry f of this it is e to the power cos x it is very difference this is cos of e to the power x and here e to the power cos x so this is cos of e to the power x and here in the place of x it is e to the power so this is about composite function data function के हमें कितना करी mix करमा ओके जितने वेला हमको बीटा फंक्शन में चाहिए like f of x is equal to e to the power x or g of x is equal to cos x and what is find out what is f composition f of x which is as same as f of x which is equal to f of e to the power x f of x is e to the power x f of e to the power x कितना असमा it is e to the power x जगह e to the power x पर क्या मतलब e to the power x so there is our f composition f of x similarly g of x g composition g of x it is g of x now what is g of x g of x is equal to cos x so this is our g of cos x अब x जगह रे फिर cos x put है so this is our cos of x so এটা হলো আমার কম্পোজিট ফাংশন র কিছু एग्जांपल इतर बाबद रे हम কিছু থিওরম भी আছে সেই থিওরম बाबद रे भी डिस्कशन करबा केते बेला फंक्शन ता बाइजेक्टिव होबा 1 1 2 होबा केते बेले f11 हेले कि कंपोजिशन फंक्शन जदि 1 1 होला कि 1 2 होला देन f11 होबा कि g11 होबा সেই बाबद रे কিছু प्रॉपर्टी আছে तार कॉम्पिटिटिव तो नहीं हुई एसोसिएटिव होगा कि नहीं से बात करें ओके